Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's class, we will talk about the most important idioms. And these idioms are very important for Sindhi Public Service Commission exams and FPSC and IBA NTS tests. And MCQs type questions are there, and we have to understand the meaning of different idioms. So let's start our today's lecture. In this is part 2, and in part 1 we had talked about some other important idioms, and we are continuing this. If you have not watched those lectures, you can watch. The link is given in the description. So let's start our lecture. We explained these idioms in part 1, so we will continue further. ये इडियम्स है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे, तो आज हम कुछ न्यू इडियम्स है वो डिस्कस करेंगे. टू हिट द नेल, होल्ड द वाटर, टू डाई इन हार्नेस, ये सारे इडियम्स हमने डिस्कस किए थे. Now this is part 2, and the first phrase or idiom in this part 2 is she goes to her mother's house off and on. अब इस idiom में, इसमें जो सेंटेंस में idiom phrase यूज़ किया हुआ है off and on. Off and on की meaning क्या होती है? So what is the meaning of off and on? So it means occasionally. She goes to her mother's house occasionally. So option C is correct. So we are marking this correct option. Option C is correct. नेक्स्ट इज़ रूल ऑफ थम. रूल ऑफ थम की मीनिंग क्या होती है? रूल ऑफ थम की मीनिंग है रफ़ एस्टीमेट. जो हम कोई रफ़ एस्टीमेट लगाते हैं, कोई आइडिया हमारे पास होता है कि ये इतने में ये चीज़ आ सकती है या इतने दिन में हम ये काम कंप्लीट कर सकते हैं. सो दैट्स कॉल्ड रूल ऑफ थम. मीन्स रफ़ एस्टीमेट, अंदाज़ो लगाइण. थुल्हे लेखे असां सिंधी में चवंदा आहियूं. The next idiom is have an axe to grind. What is meaning of have an axe to grind? So the correct option is B, selfish motive. Selfish motive जो होता है इसको हम have an axe to grind, इस idiom की meaning ये है. Next I choose the correct meaning of idiom beat about the bush. This is most common idiom that we use in our language. That why are you beating about the bush? मतलब तव्हां टॉपिक था छो पे हटो. आप टॉपिक से अगर अवॉइड करें, मेन टॉपिक से अवॉइड करते हैं, तो इसको हम कहते हैं बीट अबाउट द बुश. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. सिक एंड स्पैन. व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ स्पिक एंड स्पैन? स्पिक एंड स्पैन मतलब है जो स्पॉटलेसली क्लीन हो, बिल्कुल साफ़. बिल्कुल साफ़ जेका शइ हूंदी आहे उनखे असां सिक एंड स्पैन चवंदा आहियूं. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. टू जेज़ब. व्हाट्स मीनिंग ऑफ टू जेज़ब? जेज़ब मीन्स मेक समथिंग मोर एक्साइटिंग. जेज़ जेका आहिनि दैट आल्सो एक्चुअली मीन्स मेक समथिंग वेरी एक्साइटेड. सो ऑप्शन बी करेक्ट आहे. There were no opposition to the new policy by the rank and file of the government. Rank and file की meaning क्या होती है? Rank and file means the ordinary members, means all the ordinary members did not oppose this new policy. So option A is correct. Meaning of the idiom swan song. Swan song की meaning क्या होती है? Swan song means last work. जो हमने last work जो है
वो आखिरी बार कब और कौन सा काम किया था, दैट इज़ कॉल्ड स्वेन सॉन्ग. ही इज़ बिज़ी विथ हिज वर्क डैश. आणि जेके टेस्टूं आहिनि मुख़्तलिफ़ उन्हनि में इहे MCQs इन तरीक़े सां बि idioms मां ईंदा आहिनि. त कंप्लीट कयो या अॻियां को फ्रेज़ idiom रखो जेको इन सेंटेंस के कंप्लीट करे. सो इस सेंटेंस के हिसाब से हमें कौन सा idiom पुट करना है. ही इज़ बिज़ी विथ हिज वर्क अप टू द हिल्ट. अप टू द हिल्ट इज़ करेक्ट ऑप्शन. अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि अप टू द हिल्ट की मीनिंग क्या है. अप टू द हिल्ट मीन्स एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सकता है उतना. मीन्स इतरो बिज़ी है जितरो कोई माण्हू बिज़ी थी सके तो. सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. ही इज़ बिज़ी विथ हिज वर्क अप टू द हिल्ट. ऑल आवर्स मीन्स एट रेगुलर टाइम्स. इरेगुलर टाइम्स में असां जेको को कमु कयूं दैट इज़ कॉल्ड ऑल आवर्स. Tie the knot. It's very interesting idiom. Tie the knot means getting married. Option B is correct. The government ruled by women. What is it called? It's called petticoat government. A government that is ruled by a woman. Option A सही है. One trick pony. What's meaning of one trick pony? One trick pony means a person having one special feature, टैलेंट और एन एरिया ऑफ एक्सपर्टी. कोई ऐसा शख्स जिसके पास स्पेशल कोई टैलेंट हो, दैट इज़ कॉल्ड वन ट्रिक पॉनी. हिज ऑफिस इज़ ऑलवेज इन एप्पल पाई ऑर्डर. व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ द इडियम एप्पल पाई ऑर्डर. एप्पल पाई ऑर्डर की मीनिंग क्या होती है यहाँ. सो एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स नीट एंड टाइडी, वेरी ऑर्डरली मैनर, जेका शइ बिल्कुलु तरतीब में अरेंजमेंट में थियल हुजे, साफ़ सुथरी. So option A is correct. Hold one's horses. Hold one horses means to have patience. सब्र करना, तहम्मुल का मुज़ाहरा करना, तहम्मुल करना, सब्र करना. Idiom is used when we say that please hold your horses. मतलब सब्र कर, wait कर. Don't be very excited. Hold your horses. Hold your horses means have patience. To give cold shoulder. To give cold shoulder means to ignore someone, to humiliate someone. C is correct. To catch a tartar means, what's meaning of to catch a tartar? Catch a tartar का मतलब होता है to catch a dangerous person. जो कोई ख़तरनाक शख्स हो उसको अगर हम कैच करते हैं उसको हम कहते हैं टू कैच अ टार्टर. द नेक्स्ट इडियम इज़ टू मेक क्लीन ब्रीस्ट ऑफ मीन्स. व्हाट्स मीनिंग ऑफ टू मेक क्लीन ब्रीस्ट ऑफ मीन्स. इट मीन्स टू कन्फेस विदाउट रिजर्व्स. कोई भी चीज़ हो उसको हम कन्फेस कर लें. सो दैट इज़ टू मेक क्लीन ब्रीस्ट ऑफ मीन्स. She turned heads wherever she went. Turn heads का क्या मतलब होता है. What is meaning of to turn heads? To turn heads means attract a lot of attention. So means wherever she goes, she turns heads. Turn head का मतलब होता है किसी के जो है वो attention जो है उसको अपनी तरफ करना. Option C is correct. My friend is a coach potato. What's meaning of a coach potato? A coach potato means a lazy person. Lazy person जेको न उनके सां coach potato चवंदा आहियूं. So option C is correct. He was all at sea when he began his new job. What's meaning of all at sea? In idiom जी meaning छा थींदी. All at sea means puzzled. He was puzzled when he began his new job. परेशान होना, confused होना. At sea का मतलब है puzzled. Option C is correct. She goes to her mother's house
ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है ओकेजनली, कोई कभी कभी जाना उसके पास। फील ब्लू, व्हाट्स मीनिंग ऑफ फील ब्लू? असां ईअं चवंदा अक्सर करे ही इज़ फीलिंग ब्लू, ही इज़ फीलिंग ब्लू मीन्स ही इज़ फील्स, ही सीम्स सैड, उदास महसूस करना। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फेंडर ब्लेंडर, फेंडर ब्लेंडर मीन्स अ स्मॉल कार एक्सीडेंट, स्मॉल कार एक्सीडेंट को हम फेंडर ब्लेंडर कहते हैं। ब्लैक एंड ब्लू, व्हाट्स मीनिंग ऑफ ब्लैक एंड ब्लू? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है कोई चीज़ हम किसी को रिटर्न में दें, इसको हम ब्लैक एंड वाइट कहते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ब्लैक एंड ब्लू? ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है फुल ऑफ ब्रूसेस, ब्रूसेस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ब्रूसेस का मतलब होता है कोई स्पॉट्स जो हमारे स्किन पर आ जाते हैं, इसको हम ब्रूसेस कहते हैं, ब्राउन स्पॉट्स ऑन द स्किन। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स रेनिंग हैविली, बहुत ज़्यादा बारिश होना, इसको हम रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स कहते हैं। सो मीनिंग ऑफ द इडियम रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स रेनिंग वेरी हैविली। कीप एट बे, मीनिंग ऑफ कीप एट बे इज़, इसका क्या मतलब होता है कीप एट बे का? कीप एट अ डिस्टेंस, किसी को कोई कुछ डिस्टेंस पे रखना, दूर रखना। ऑप्शन बी करेक्ट है। एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड, एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड का मतलब होता है जैसे ही हम ऑर्डर करें, जैसे ही हम आपको इंस्ट्रक्शंस दें। सो यू हैव टू स्टार्ट रनिंग एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड मीन्स, सो एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड का मतलब होता है बहुत जल्दी वो काम करना, जैसे ही हमने कहा और आपने कर दिया। सो इट एज सून एज इट वाज स्पोकन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फार क्राई फ्रॉम, फार क्राई फ्रॉम की मीनिंग क्या होती है? फार क्राई फ्रॉम मीन्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम, योर लैंग्वेज इज़ फार क्राई फ्रॉम आवर्स। सो मतलब आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत डिफरेंट है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम। इफ़ वन थिंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर थिंग वी से इट इज़ फार क्राई फ्रॉम इट। व्हेन पिग्स फ्लाई, इस इडियम के क्या मतलब होता है? व्हेन पिग्स फ्लाई मीन्स समथिंग दैट विल नेवर हैपन और इट इज़ इम्पॉसिबल, कोई अगर कोई चीज़ मुमकिन ही ना होना तो ऐसे कहते हैं हम व्हेन पिग्स फ्लाई। फॉर एग्ज़ाम्पल हम वो दिन भी आएगा जब पिग्स जो है वो फ्लाई करेंगे, तभी हम ये काम करेंगे। इट मीन्स इट विल नेवर हैपन और इट्स इम्पॉसिबल। Wild goose chase, what's meaning of wild goose chase? Means a foolish and hopeless search for something, कोई भी ऐसी बस चीज़ को ढूंढना जो नामुमकिन हो मिलना, तो इसको हम कहते हैं a wild goose chase. Spill the beans, what's meaning of spill the beans? Means reveal someone's secret. वात मां सिंधी में असां हिनखे चवंदा वात मां मुंग कढणु, मतलब जेको राज़ आहे उहो चई ॾियणु, ॿुधाइणु ॿियनि खे। सो सीक्रेट, अगर आप किसी को किसी सीक्रेट बताते हैं तो इसको हम कहते हैं स्पिल द बीन्स। गेट योर गोट, व्हाट्स मीनिंग ऑफ गेट योर गोट? मीन्स इरिटेट समवन, किसी को इरिटेट करना, किसी को गुस्सा दिलाना, इरिटेट समवन, इट्स कॉल्ड गेट योर गोट। Drop a dime, what's meaning of drop a dime? Drop a dime means to be an informant. Option A is correct. So these are the idioms that we have discussed, and we also have a list of other important idioms that we will share with you in our next lecture. Thanks for watching. Do subscribe our channel for new videos. Thank you very much. See you soon.